वेलकम टू पारस एंड नोट्स ऑफ क्लासेस। आज जो मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं यहाँ पे आपको लेके आई हूँ, जो कैपिटल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग को मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली उसकी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी एजम्पशंस को फॉलो किया जाता है एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कब होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होनी चाहिए। और किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जब अपना एक फाइनेंसिंग पैटर्न मिक्स या फिर हम कैपिटल स्ट्रक्चर उसे कह लें, जब उसे वो डिसाइड करती है तो उसे कौन कौन से डिसीजंस को ध्यान में रखना होता है एंड फॉर्म्स क्या होनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर की। एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या फॉर्म्स होने चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। एंड व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग द फाइनेंसिंग पैटर्न। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से ध्यान में रखने होंगे जब हम एक कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए डिसाइड करने जा रहे हो या फाइनेंसिंग पैटर्न मिक्स को हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो। देन उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसको सिम्बॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम होना ध्यान में रखा जाता है। देन एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करके चलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को। देन आफ्टर डिस्क्राइबिंग अबाउट द फैक्टर्स affecting capital structure, then what are the different approaches to determine capital structure, we just discuss about that also. then approaches के बाद में मैं यहाँ पे बात करूँगी कि फैक्टर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को जो कि इफ़ेक्ट करते हैं वो समरी रूप में कौन कौन से फैक्टर हम यहाँ पे बता सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, or we can say first part of capital structure. In another part of capital structure, we just have discussed about the theories of capital structure. There are two main types of theories of capital structure, that is relevant and irrelevant. So just keep watch second part also for full view of capital structure chapter. So first of all start with the meaning of capital structure. आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद में जब आप ये कैपिटल स्ट्रक्चर का जब आप चैप्टर रिवाइज़ करोगे बुक में से या कहीं से भी, तो आपको एक ईजी हेल्प हो जाएगी उन सारे कॉन्सेप्ट्स को माइंड में क्लियर करने से रिलेटेड, जो कि एक डिफ़िकल्ट प्रपोजिशन में बन जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्लियर करने से रिलेटेड। कोई कमेंट अगर आपके होते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें कमेंट बॉक्स में जा कर के पुट कीजिए, और इसे अगर आप लाइक करते हैं तो शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकन पर जाके आप क्लिक करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करना चैनल को कभी मत भूलिए। सो कैपिटल स्ट्रक्चर के स्टार्ट करते हैं हम विद द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आपके पहले आप माइंड में सोच के देखें, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग हमारे दिमाग में क्या आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल मीन्स पूंजी एंड स्ट्रक्चर मीन्स संरचना। तो एक पूंजी की संरचना कैसी होनी चाहिए। अब हम कभी भी जब हम डिसाइड करते हैं कोई बिज़नेस अगर हम ऑपरेट करने जा रहे हैं, तो हमारे माइंड में एक ही बात होती है कि हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए। वेदर हम हमारी खुद की कैपिटल को यूज़ करें या हम बोरो करें बाहर से, हमारा कितना शेयर रखें हम हमारी खुद की इक्विटी कैपिटल का, बाहर के प्रेफरेंस शेयर्स का कितना रखें, बाकी डिबेंचर्स या डेट के रूप में हम कितना शेयर ऑप्ट करें, तो उसका रिटर्न कितना होगा, मीन्स रिटर्न एंड रिस्क कितना होगा। तो व्हेनेवर we just decide about the capital structure decision, so the basic concept in our mind is what is the rate of return and what is the cost of capital। ये दो चीज़ें हमें ध्यान में हमारे दिमाग में आ जाती है जब हम जर्नल फॉर्म में बात करें कि हम अगर हम लगाते हैं पैसा किसी भी जो पूंजी की अनुपात हम रखते हैं, तो उसमें हमारा क्या रेशो होना चाहिए। वेदर हम हमारी खुद की इनकम ज़्यादा पुट करें या बाहर का शेयर लें, तो उसमें कितना हमारा अथॉरिटी पे कितना इफ़ेक्ट होगा। तो ये सारी बातें हमें यहाँ ध्यान रखने होती है। तो आपको जब लिखना हो कि मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में आप क्या लिखोगे, सो यहाँ पे जो मैं आपको लाइन प्रोवाइड कर रही हूँ तो आप उन्हें क्लियरली अंडरस्टैंड कर लीजिए। सो इट रेफर टू द मिक्स ऑफ ए फर्म्स कैपिटलाइजेशन एंड इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स सच एज डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स and equity share capital and retained earning. So capital structure refer to the mix of a firm's capitalization.
include long-term sources of funds, that is long-term debt, such as debentures, preference share capital, equity share capital and retained earnings. So normally a capital structure is a mix of firm's capitalization process which include equity share capital, preference share capital, debentures, debt and retained earning. So all these mixture relate to capital structure formation for a company. किसी भी कंपनी के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन, अगर हम जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं, मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमें यही पता होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली एक मिक्स होता है फाइनेंसिंग पैटर्न का, जिसमें हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज लाइक डिबेंचर्स इंक्लूड होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड होती है अलॉन्ग विद रिटेन्ड अर्निंग्स. Then what is the definition of capital structure? After describing the meaning of capital structure, you just have to write the definition of capital structure. So what is the definition of capital structure? So according to Grestenberg, the definition is given by Grestenberg. So according to Grestenberg, capital structure is the makeup of a firm's capitalization. Capital structure is the makeup of a firm's capitalization. In other words, it refers to the proportion of debt, preference and equity share capital. So Grestenberg defined that capital structure is the makeup of a firm's capitalization. किसी भी फर्म की कैपिटलाइजेशन को मेकअप करने से रिलेटेड बताया ग्रेस्टनबर्ग ने. In other words, we can say it refers to the proportion of debt, preference share capital and equity share capital. So Grestenberg defined capital structure as the mix of debt, equity capital and preference share capital. Or we can say it is the makeup of a firm's capitalization process in terms of equity, preference and debt, long-term debt, equity share capital and preference share capital. So this is the definition provided by Grestenberg of capital structure. Now, after describing the meaning and definition, I hope कि meaning और definition आपको clear हो गया होगा माइंड में. अब हम बात करेंगे कि जब हम चूज़ कर रहे होते हैं राइट कैपिटल स्ट्रक्चर, तो वो किस पे डिपेंड होता है. सो चॉइस ऑफ चूजिंग अ राइट कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिपेंड्स ऑन व्हाट. अब एक राइट कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसीजन लेना किस पे टोटली डिपेंड करता है. सो अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शन एंड लेवल ऑफ रिस्क इन द बिजनेस. कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन टोटली डिपेंड करता है किस पे, उसके फंक्शंस पे, कि कंपनी किस एरिया में फंक्शन ऑपरेट करती है. फंक्शनरी एरिया क्या है कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, कौन सा है. देन फंक्शनरी एरिया एंड लेवल ऑफ रिस्क इन द बिजनेस. सो in short, we can say that choice of choosing the right capital structure is totally depends on its function and level of risk in the business. किसी भी बिजनेस में कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेना डिपेंड करता है कि बिजनेस का फंक्शन क्या है और बिजनेस में लेवल ऑफ रिस्क क्या है. सो आपको ये ध्यान में रखना होगा जब भी अगर मान लीजिए कोई कंपोजिट क्वेश्चन भी थ्योरी फॉर्म में कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछा जाता है. सो यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड द मीनिंग. आफ्टर डिस्क्राइबिंग द मीनिंग, देन यू हैव टू प्रोवाइड डेफिनेशन, देन यू हैव टू प्रोवाइड व्हाई, what is the main factor of decision in choosing a right capital structure for a business. So it totally depends upon the functionary level of business and risk level in the business. Now the next question is, what are the forms of capital structure? Now what are the various forms of capital structure? Capital structure की various forms क्या क्या हो सकती हैं कि जिनमें capital structure decide किया जा सकता है कंपनी के लिए. सो यहाँ पे जो फॉर्म्स की मैं बात करूँगी, सो देयर आर 4 forms ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. यहाँ पे 4 फॉर्म ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया जा सकता है. फर्स्ट वन, कम्प्लीटली इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर आप डिसाइड करो कंपनी में इन्वेस्ट करना, सो कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट इक्विटी शेयर कैपिटल. देन सेकेंड वन, डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. एक पहला जो ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे गिवन किया, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कैसा फॉर्म होना चाहिए, दैट मीन्स अ कंप्लीट इक्विटी शेयर कैपिटल. सेकंड फॉर्म जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इक्विटी कैपिटल के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी मिक्स करना कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए. देन थर्ड मेन पार्ट ऑफ फॉर्मिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर अ बिजनेस इज डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी. We can use debt along with equity. Then fourth one, different proportion of debt, equity and preference share capital. So there are 4 forms can be used in a business
in deciding capital structure. First one, complete equity share capital. Second one, different proportion of equity and preference share capital. Third one, different proportion of debt and equity. Then fourth one, different proportion of debt, equity and preference share capital. So these are the four variants of or we can say these are the four forms of capital structure which can be used in a business. Now, what are the fundamental principles should be kept in mind while selecting the financing pattern? अब क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़रूरी है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को लेते समय एक फाइनेंसिंग पैटर्न को मिक्स को डिसाइड करते हुए कि हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से ध्यान में रखना ज़रूरी है. सो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग द फाइनेंसिंग पैटर्न, देन व्हाट यू हैव टू राइट. जस्ट लुक एट द आंसर. So answer is, financing pattern of an organization is based on fundamental principles which are cost principle and second is risk principle. There are two types of main principles should be kept in mind while selecting a financing pattern for a business. First one is cost principle. Second one is risk principle. Then what you have to write under cost principle? Cost principle, a best suited capital structure or financing pattern is that which minimize the cost of capital and maximize the earning per share. So a best suited capital structure, or we can say a financing mix, should be that which minimize the cost of capital for a company and maximize the earning per share. So according to cost principle, a sound capital structure for a company is that which minimize cost of capital of that company and maximize earning per share for that company. Then second principle is risk principle. Risk principle, according to this, reliance is placed more on equity for financing capital than excessive use of debt. More reliance on equity for financing capital than excessive use of debt. So according to risk principle, we should consider more reliance on equity for financing capital structure than excessive use of debt. So there is a preference given to more equity pattern, not for excessive use of debt. So there are two types of principles should be followed when selecting a capital structure. Cost principle, according to that, a sound capital structure or a best suited capital structure is that which minimize cost of capital and maximize earning per share. Then risk principle, according to that principle, reliance place more on equity for financing capital than excessive use of debt. So there are two types of associated risk. Then under risk principle, there are two types of risk फॉलोड. अब यहाँ पे दो मेन टाइप के, अब जब आप रिस्क प्रिंसिपल को यहाँ पे हम एलेबरेट कर रहे हैं तो रिस्क प्रिंसिपल मीन्स जो हमने उसका पूरा राइटअप कर लिया कि रिस्क प्रिंसिपल में देखा क्या जाता है कि जहाँ रिस्क कम हो तो मोर रिलायंस किस पे होता है, इक्विटी पैटर्न पे, जो कि हमारी खुद की शेयर होल्डर की इनकम होती है. तो मोर रिलायंस प्लेस्ड ऑन इक्विटी पैटर्न इन comparison to excessive use of debt. Then there are two kinds of risk. One is business risk and second one is financial risk. There are two types of risk associated with that topic. One is business risk and second one is financial risk. Business risk basically refers to risk involved in operations of business, or we can say that risk involved in day-to-day operations of business. Then financial risk basically refer to the risk of financing pattern used in a business. So while selecting the financing pattern, the following points should be kept in mind. So apart from all two main principles, one is cost principle, second one is risk principle, and risk principle also divided into two types of risk. One is business risk and second one is financial risk. Then briefly we have to write that selecting a financing pattern, the following points should be kept in mind. First one is the risk-less cost of the particular type of financing. Risk-less cost of the particular type of financing, that is denoted by RJ. Then the business risk premium, that is denoted by B, and the financial risk premium, that is denoted by F. So symbolically, cost of capital may be represented as, cost of capital stands for KO, that is overall cost of capital or weighted average cost of capital. So KO equals to RJ, that is risk less cost of
for a particular business plus business risk premium and plus financial risk premium. सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक मैंने आपको फॉर्मूला गिवन किया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड आउट की जाती है. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की यहाँ बात कर रहे हैं तो रिस्क लेस कॉस्ट प्लस आपका यहाँ पे बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस रिस्क प्रीमियम एंड एफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिस्क. सो इट इंक्लूड ओवरऑल cost of capital for a business. So main point should be kept in mind that risk-less cost of the particular type of financing should be kept in mind. Then business risk premium and financial risk premium that is included in business risk principle, or we can say that risk principle. So whenever a question asked about that what should be kept in mind while selecting a financing pattern or capital structure for a company, then there are two types of risk should be kept in mind. First one is cost principle, second one is risk principle. Then according to cost principle, a best suited capital structure for a company is that which maximize earning per share and minimize cost of capital. Then according to risk principle, a best suited capital structure form for a company is that which has less risk, or we can say that which place more reliance on equity in comparison to debt or outsider debentures or debt, long-term debt. Then again risk is divided into two parts, business risk and financial risk. Then apart from that, all three points should be considered while selecting a capital structure mix. First one, riskless cost of particular type financing, that is RJ, business risk premium, that is B, and financial risk premium, that is F. And symbolically we can find cost of capital, or we can say that overall cost of capital KO equals to RJ plus B plus F. Now a short note comes on what is optimum capital structure for a company, or what is the main criteria of selecting optimum capital structure for a company. So capital structure is optimum where the firm has a combination of equity and debt, so that the wealth of firm maximum. At this level cost of capital is minimum and market price per share is maximum. So capital structure is optimum where the firm has combination of equity and debt, so that the wealth of the firm is maximum. At this level cost of capital is minimum and market price per share is maximum. So in short we can say that a sound or optimum capital structure for a company is that which can minimize the wealth or earning per share for a company and minimize the cost of capital for a company. And it's a combination of equity and debt both, so that the wealth of firm can be maximum, and at this level cost of capital is minimum and market price per share or earning per share is maximum. So the basic condition of optimum capital structure is, इसे आप एक हाईलाइट करके लास्ट में इसे पूरे पैराग्राफ को राइट अप करने के बाद आप बता सकते हो. सो बेसिक कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज मिनिमम cost of capital and maximum market price per share or earning per share. Now the next main question in this chapter, what are the factors affecting capital structure decision? What are the main factors affecting capital structure? So an appropriate capital structure should have the following features. An appropriate capital structure should have the following features. What are those? First one is return. And what we have to write under return topic, which provide maximum return to its shareholders. A capital structure should be that which provide maximum return to its shareholders. Then second main feature, risk. And what you have to write under this? Risk should have minimum risk. There should be minimum risk in selecting a capital structure decision for a company. Then third main feature, flexibility. And what you have to write under this? Flexibility means that can be changed according to the circumstance or situation in a current scenario. So it should be flexible to meet the changing condition. So a capital structure should be flexible to meet out the changing condition of the current scenario. Then capacity. Fourth one, capacity. And what you have to write under capacity head?
A company should have capacity to buy fixed interest charges in debt. A company should have capacity to buy fixed interest charges in debt. Then fifth main topic, control. And what you have to write under this? More debt decrease the control of shareholders and more equity increase the control of shareholders. So controlling part is also one of the main feature of selecting a capital structure for a company. So if a company use more debt, that means there is a decrement in the control of shareholders. And if a company follow equity share capital, then it increase the control power of shareholders. So there are 5 main points, or we can say that 5 main factors which should be affected the capital structure decision. First one is return. So return should be maximum for the shareholders. Risk should be minimum, and flexibility and capital structure should be flexible to meet out the changing conditions according to current scenario. Capacity, company should have capacity to pay fixed interest charges in debt. Control, or we can say that more debt decrease the control power of shareholders and more equity increase controlling power of shareholders. So 5 main points should be kept in mind, or we can say that 5 main features of a sound capital structure. Now, what are the main approaches to determine capital structure? What are the main approaches to determine capital structure? एक प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेज को फॉलो किया जाता है? सो देर आर 3 मेन अप्रोचेज टू डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड दोज आर, फर्स्ट वन इज EBIT EPS approach. EBIT EPS approach. EBIT means earning before interest and tax. Just clear about EBIT. EBIT is a full form of earning before interest and tax. And EPS is earning per share. So EBIT EPS approach. And what you have to write under this? To analyze effect of debt on EPS, this approach should be used in selecting a capital structure for a company. So EBIT EPS approach is basically analyze effect of debt financing on EPS, or we can say that analyze the effect of more use of debt financing in a company on earning per share. Then second main approach, valuation approach. Valuation approach means valuation related to valuing the value of firm. So what you have to write under this approach? This approach is basically analyze use of debt on value of firm. So evaluation approach basically analyze use of debt financing on value of firm. Then cash flow approach. Third main approach is cash flow approach. What you have to write under this? To analyze debt service capacity. Cash flow approach basically analyze debt service capacity. So there are 3 main approaches behind a capital structure decision. First one is EBIT EPS approach. EBIT EPS approach basically analyze the use of debt on earning per share. And second approach is valuation approach. Valuation approach is analyze the use of debt financing on value of firm. Then cash flow approach analyze debt service capacity. Cash flow approach basically analyze debt service capacity. So 3 main approaches should be clear in your mind. Then what are the factors affecting a capital structure decision? In a business, when a finance manager has to take a decision to decide a sound capital structure for his company, then what factors he should consider, or we can say what factors affect the capital structure decision for a company. So the factors are tax benefit on debt. Factors are tax benefit on debt. There is a tax benefit on debt financing. If a company choose use of more debt financing, then it can be opt for tax benefit or tax shield benefit on interest charges on debt. फर्स्ट जो यहाँ पे आपका फैक्टर है टैक्स बेनिफिट से रिलेटेड, ये क्लियर हो जाना चाहिए. टैक्स बेनिफिट डेट पे कब होता है? जब अगर कोई कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग को यूज़ करती है तो वहाँ उसे एक पॉजिटिव पॉइंट, एक एडवांटेज पॉइंट मिलता है कि उसे जो उसके इंटरेस्ट चार्ज होते हैं उस पर उसे टैक्स शील्ड मिलती है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है वहाँ पे. देन सेकंड
Dilution of control. Second main factor is dilution of control. Dilution of control basically it refers to कि how or to what extent we can say that to what extent a company wants controlling power in his own hand or in other shareholders hand. If a company choose to use equity financing, that means it want to use shareholders control. And if the company choose debt financing, that means it does not want controlling power in shareholders hand. So dilution of control is second main factor. Then third main factor is industry leverage ratio. Industry leverage ratio, it include operating leverage, financial leverage and combined leverage. So leverage ratio, इंडस्ट्री का leverage ratio क्या है, operating leverage कैसा है, financial leverage कैसा है, वो condition भी ध्यान में रखना. Then flexibility होनी ज़रूरी है किसी भी capital structure में, कि वो flexible होना चाहिए जिसे हम change कर सकें according to changing condition. Then period of finance. पीरियड ऑफ फाइनेंस भी हमें ध्यान में रखना होता है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए. अगर हम शॉर्ट टर्म पे फोकस करें तो दैट मीन्स हम यहाँ पे डेट फाइनेंसिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म अगर हमारा फोकस है तो दैट मीन्स हमें इक्विटी कैपिटल को यहाँ पे यूज़ करना होता है. सो यहाँ आपको जो लिखना होगा, जो पॉइंट आपको लिखना होगा पीरियड ऑफ फाइनेंस में, इफ़ अ कंपनी focus on short term financing, then it should be opt for debt financing. If a company focus on long term financing pattern, then it should be opt for equity financing and preference share financing. Then degree of competition, one of the main factors affecting capital structure decision. Then timing of public issue. Timing of public issue is another main part or factors affecting capital structure. Then legal requirement. What are the main legal requirement imposed by SEBI? Legal requirement, that means debt equity ratio not more than 2:1. Debt equity ratio should not be more than 2:1. Preference share capital to equity ratio is not more than 1:3. And promoters should hold at least 2.5% of equity, or we can say that promoters shareholders ratio, that is 2.5:1, 2.5% of equity. So there are three main legal requirement imposed by SEBI, that if a company opt for debt and equity proportion or capital structure decision, then debt equity ratio should not be more than 2:1. And preference share capital to equity capital mix, it should not be more than 1:3. And promoters shareholders ratio not be more than or not be less than 2.5% of equity. Promoter share not be less than 2.5% of equity. So there are 8 main points which describe about the factors affecting capital structure decision. First one is tax benefit should be considered, tax benefit on debt, dilution of control, industry leverage ratio, flexibility, period of finance, whether short term financing or long term financing, degree of competition, timing of public issue, legal requirement, that is debt equity ratio not be no more than 2:1, preference to equity not more than 1:3, and promoters ratio should not less at least to 2.5% of equity. Then we can show these major consideration in capital structure planning. So what are the major considerations should be kept in mind while planning for capital structure decision? जब एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को प्लान किया जाता है तो उसमें कुछ मेजर कंसिड्रेशन को ध्यान में रखा जाता है. जब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग से रिलेटेड बताइए, तो वहाँ पे हमने जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए थे वो हम उन्हीं को देखते हुए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना करके डिवाइड कर रहे हैं. तो आप भी इसी तरीके से इसी पैटर्न में इस आंसर को लिखोगे. मेजर कंसिड्रेशन इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, बेसिकली you just have to make 4 column. First one related to types of fund, second one related to risk, then cost and control. 3 main considerations should be kept in mind while selecting a capital structure decision: risk, cost and control. Then first one इक्विटी फंड. इक्विटी फंड से रिलेटेड यहाँ पे रिस्क में हमारा क्या लिखना होगा हमें, इक्विटी कैपिटल शुड हैव लो रिस्क, इक्विटी कैपिटल हैव लो रिस्क. Or we can say that as no question for repayment of capital except when the company is under liquidation. So hence best from the point of view of risk. Equity capital in a capital structure decision is a best from the point of view
of low risk pattern. Equity capital as low risk because there is no certainty of repayment of shareholders' wealth, only except under the consideration of liquidation. Then cost most expensive for a company. If a company choose equity capital, then it is more expensive. As the dividend expectation of shareholders are higher than interest rates, so also dividends are not tax deductible. यहाँ पे अब क्यों मोर एक्सपेंसिव होती है ये कॉस्ट से रिलेटेड, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे किया जाता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है इंटरेस्ट रेट से ऊपर, इंटरेस्ट रेट चार्ज करने से ऊपर, तो और डिविडेंड के ऊपर टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव पैटर्न होता है. एंड कंट्रोल के हिसाब से अगर हम बात करें तो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल के लेवल पे बात करें तो एज द कैपिटल बेस माइट बी एक्सपेंडेड एंड न्यू शेयर होल्डर्स आर इन्वॉल्व. यहाँ पे डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल टोटली किन के हाथों में होता है, शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है, इसलिए इक्विटी कैपिटल बेस्ट सोर्स होता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के लिए. सो लो रिस्क मोस्ट एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्रिंसिपल एंड डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे भी बेस्ट सोर्स होता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के लिए. देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की यहाँ पे हम बात करेंगे. सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल स्लाइटली हैव हायर रिस्क in comparison to equity capital. It redeemable after certain period of time because it is redeemable after a certain period of time. So that only by this way we can say that preference share capital slightly have higher risk in comparison to equity capital due to redeemable after a certain period of time. Then cost principle slightly cheaper than equity. It is cheaper than equity share capital but higher than loan fund. It is cheaper source than equity capital but higher than debt capital. Then dilution of control, since voting rights are restricted, no dilution of control. Dilution of control में क्या आएगा, no dilution of control, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्ट होते हैं. देन हम बात करेंगे अब लोन फंड्स की. लोन फंड्स यानी कि डेट से रिलेटेड. हाई रिस्क कैपिटल शुड बी रिपेड एज पर एग्रीमेंट. हाई रिस्क होता है किसमें, डेट फाइनेंसिंग में. जब हम लोन लेते हैं, डेट फाइनेंसिंग को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हाई रिस्क होता है, क्योंकि कैपिटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिपेड एज पर एग्रीमेंट, इसे पे करना होता है एग्रीमेंट के तौर पे. देन कॉस्ट में क्या लिखना होता है, कंपेरेटिवली cheaper than equity and preference share capital. Why? Prevailing interest rates are considered only to the extent of after tax impact. So there is a tax benefit on interest charges on debt. So that's why we can say that debt financing is a cheaper source in comparison to equity and preference share capital, and no dilution of control. And control में आपको लिखना है no dilution of control. So these are the main consideration, risk, cost and control while selecting or planning a capital structure decision for a company. Equity capital, preference share capital and loan funds. Equity have low risk and most expensive, and dilution of the control is properly dilution of control in hands of shareholder. Preference share capital is slightly higher risk as comparison to equity capital and slightly cheaper source than equity but higher source than loan funds. Then no dilution of control and loan funds are high risk, comparatively cheaper and no dilution of control. Then what are the general assumption in capital structure theories? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में जनरल अजम्पशंस कौन सी फॉलो की जाती हैं? सो देयर आर द फॉलोइंग अजम्पशन इन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एंड दोज आर देयर आर ओनली टू सोर्स ऑफ फंड, वन इज डेट एंड इक्विटी, नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. There are only two source of funds, debt and equity, no preference share capital. Second one, the assumption is total assets of firm and capital employed are fixed. Total assets of firm and capital employed are fixed. Third one, all earnings are distributed to equity shareholders. All earnings should be distributed to equity shareholders. Fourth one, the firm earns operating profit and it is expected to grow. Firm earns operating profit and it is expected to grow. Then fifth one, business risk is constant and not affected by financing mix decision or no change in fixed cost. So business risk is constant and not affected by financing mix decision, and there are no corporate tax or personal tax, and the investor have the same subjective
profitability distribution of expected earnings, or we can say the same interest of investors. So there are 7 main assumptions of capital structure theories. We can say in general form, only 2 sources of fund, debt and equity, no use of preferential capital, total assets of firm and capital employed are fixed, earnings should be distributed into equity shareholders, and firms earn operating profit and it is expected to grow, business risk is constant, not affected by any financing mix or no change in fixed cost pattern, no corporate tax or personal tax, and investor have the same subjective profitability distribution of expected earning. So this is all about the first main part of capital structure and capital structure theories. In first part we just discuss about the meaning and definition of capital structure. Then after describing the meaning and definition, what are the forms of capital structure, what are the forms of capital structure, and the capital structure decision totally depends on what, that is functionary level and level of risk in a business. And forms of capital structure can be equity and preference, can be equity, preference and debt, and can be debt and equity. Then fundamental principle, cost and risk principle should be followed. Cost principle and risk principle again divided into 2 parts, business risk and financial risk. Then risk-less cost of particular type financing should be followed, business risk premium and financial risk premium. So cost of capital can be calculated as RJ plus B plus F. Then optimum capital structure definition is given. Optimum capital structure is a mixture of equity and debt, or we can say that which maximize the wealth of a firm and minimize the cost of capital and maximize the earning per share or market price for a firm. Then factors affecting capital structure, return, risk, flexibility, capacity, control. Approaches are EBIT EPS approach to analyze debt on EPS and valuation, analyze debt financing effect on value of firm, and cash flow approach, analyze debt service capacity. Factors affecting capital structure decision, tax benefit, dilution of control, industry leverage ratio, flexibility, period of finance, degree of competition, and timing of public issue and legal requirements. That is what the restriction imposed by SEBI. Debt equity pattern should not be more than 2:1, preference capital to equity should not be more than 1:3, and promoter should not hold at least 2.5% of equity. Then major consideration of capital structure planning is based on 3 main parts: risk, cost and control. Then equity has low risk and more dilution of control and most expensive, and preferential capital slightly cheaper source than equity, and slightly higher risk than than equity, and no dilution of controls. Loan funds have high risk and cheaper quality and no dilution of control. General assumption of capital structure theory. So please watch second part of this chapter also, that includes the main capital structure theories in detail form. One is relevance theory and another one is irrelevance theory. So for full view of capital structure theories in a easier form, just view the second part of this chapter. So keep watching second part.